They've overcome adversity and discrimination to reach the top of their game. Role models who've broken barriers and allowed women in India to dream bigger. And the public will decide which one of them wins the top honour. I've been a runner for about 6 years now, and I can't imagine life without it. But as a girl growing up in India in the 1980s, I hardly ever played any sport. Mostly because women weren't really encouraged to take it up. That is changing, but slowly. The last big marathon I did just a few weeks ago in the city of Mumbai, for example, less than a fifth of the participants were female. And this is in an urban, developed part of the country. So it's hardly surprising the kind of struggle India's top sportswomen have had to go through. In fact, the first of our 5 nominees for the Sportswoman of the Year award comes from perhaps one of the most patriarchal parts of the country. Vinesh Phogat is a wrestler, and she's overcome social taboos, injuries and several other obstacles to participate in the Olympics and win gold medals for India at the Commonwealth Games and the Asian Games. ताऊ जी के दिमाग में आइडिया आया कहीं से। एक के बाद एक लड़कियां हमारे घर में पैदा हो रही थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए उस चीज़ को लेकर। उनका थिंकिंग ऐसा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़कियां काम करें, जाके किसी शादी कर दी, बच्चे हो गए या काम करें। Vinesh and her 5 female cousins were trained by her uncle. She says he was a strict coach who kept them focused. घर में ही मिट्टी डाल दी उन्होंने। हम पूरा 1-2 महीना खेले। उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ कि कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने रेसलिंग में डाला और फिर वो जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। He didn't give them any days off and didn't allow them to grow their hair long. वो एक ही बात बोलते थे कि अगर आपका ड्रीम है कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आए तो फैशन को छोड़ दो, ट्रेनिंग और खाना और पीना और सोना। जैसे मैं शॉर्ट्स पहन के जाती थी तो मेरी मम्मी को पास वाली आंटी ने किसी ने बोल दिया कि लड़की को ना बोलो कि कम से कम लोअर तो पूरा डाल के जाए। मेरे बाल लड़कों के जैसे काट रखे हैं तो मैं निक्कर भी लड़कों के जैसे डालूंगी। पापा की डेथ हो गई, उसके बाद मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि गांव के लोग भी बोलने लगे थे कि ये बड़ी हो रही हैं अभी तो आप इनकी शादी का सोचो क्योंकि आप अकेले आप मदर हो। लेकिन मम्मी का भी जगह इतने साल तक अगर मेहनत की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह ही मतलब घर का काम करे। विनेश 5 साल की थी ने जिद खाड़ा के अंदर भेज दी थी। फिर मेरे न्यू आत्मा में न्यू होगी ठंडी भाई इतना कष्ट लिया तो आज मान फल मिल गया। Many had expected that Vinesh would win a medal at the 2016 Olympics in Rio. But those hopes were dashed after she suffered a knee injury. रियो के बाद एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि गया सब कुछ हाथ से निकल रहा है। मैं इतनी रोती थी। वो जो रूम के अंदर होता था वो मुझे ही पता है। वो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है। वो मेरी खुद की लड़ाई है। मैं टूटती हूँ और वह जुड़ती हूँ वो खुद के लिए करती हूँ मैं। अभी सेकेंड ओलंपिक में अगर मुझे मौका मिला है जो सोच रखा था इतने सालों तक वो मैं पूरा करूं। In many parts of India, the birth of a girl is unwelcome because she's seen as a financial burden. उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि ये क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहलवान बना देंगे। तो वो चेंज हमारा मेडल से बड़ा है कहीं ना कहीं। अगर हम लड़कियों के लिए या अपनी रेसलिंग के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो वो मेडल से कम नहीं है। The success of Vinesh Phogat has helped boost the profile of wrestling in a nation long obsessed with one particular sport. Super cricket. Cricket. Despite all the attention it gets though, few would know that the Indian women's cricket team does as well as the men's team internationally and in some formats is even ranked higher. But are female cricketers still treated differently?
I've come to a cricket academy in South Delhi to hear the views of up-and-coming players. रीति, क्या जो फैसिलिटीज़ मिलती है क्रिकेट में, तो जो औरतों को मिलती है या महिलाओं को मिलती है और जो मेंस क्रिकेट को मिलती है, उसमें आपको क्या फ़र्क दिखता है? फ़ीस में तो बहुत फ़र्क है। जैसे लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ीस मिलती है, लड़कियों को उनके हिसाब से कम फ़ीस मिलती है। और जैसे दर्शक भी है, जैसे लड़कों के मैच में पूरा स्टेडियम फुल रहता है। अकोमोडेशन है, लड़कों को तो बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, हमें पहले नहीं मिलता। 2017 वर्ल्ड कप के बाद हमें अच्छा अकोमोडेशन मिलने लगा है। The success of the women's team has begun to open doors for young female cricketers. Devyani, you're 13. Did you get much support from your family when you decided to play this sport? Only for my cricket, only to let me develop, only to let me come up. So my parents shifted from Lucknow to Delhi. And I feel that I'm the most fortunate here because we cannot see all the girls getting the same kind of support in India. Now, whether it's cricket or any other sport, a challenge players often face in India is that they can't afford training equipment. Our next nominee, Dutee Chand, came from a poor rural background. She's a sprinter who's broken several records and recently came out as India's first openly gay athlete. But when she first started running, she didn't even have a pair of shoes. दुनिया में तो टीवी में सिर्फ 10 सेकंड या 12 सेकंड के लिए देखते हैं कि हम दूती भाग रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि मैं 11 सेकंड भागने के लिए 365 दिन मेहनत करते हैं। Dutee Chand is one of South Asia's fastest female athletes. She achieved her career best time last year in the 100-meter race category. नहीं जीतेंगे तो दुनिया नहीं पूछेंगे, तो हमेशा जीत करना पड़ेगा। तो इस जीत करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। लगभग दिन में 6 से 7 आवर ट्रेनिंग करना पड़ता है। Dutee comes from a rural, impoverished background. Her older sister was a runner who encouraged Dutee to take up the sport too. मैं नहीं चाहती थी कि रनिंग करने के लिए बचपन में, लेकिन मेरी दीदी ने एक बात बताया था कि तुम अच्छा रनिंग करोगे तो तुम पढ़ाई भी अच्छा कर सकते हो। तो इसको पाने के लिए मैं रनिंग शुरुआत की। और उस टाइम में बहुत दिक्कत तो वही था क्योंकि रनिंग के टाइम में मेरे पास पाँव में शू नहीं था, आसपास में कोई ग्राउंड भी नहीं था, अच्छा कोचेस भी नहीं थे मेरे पास में। तो फिर भी अकेले मैं रनिंग कर रही थी, कभी गांव में, कभी नदी के किनारे में, कभी रोड के ऊपर। तो जब भी स्पाइक वर्कआउट की ज़रूरत पड़ता था तो भुवनेश्वर जाना पड़ता था बस में। अब बस में भी जाने के लिए भी बस फेयर भी मेरे पास नहीं था इस टाइम में, और घर वालों में भी नहीं देते थे इस टाइम में। कभी रेलवे स्टेशन में रात गुजारा मैंने, कभी फ्रेंड के घर में, ऐसे बहुत दिक्कत से आया मैंने उस टाइम में। In 2014, Dutee was found to have higher levels of male hormones in her body and wasn't allowed to compete in national and international events. हार्मोन तो सभी के बॉडी में रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी के कम रहता है। तो इसमें मेरा क्या गलती है? तो बहुत दिक्कत हो रहा था इस टाइम में। अब मेंटली तो हरासमेंट हमेशा होती थी, कोई ना कुछ बोलते रहती थी इस टाइम में। तो इसको लेके मैंने केस अपील किया और लास्ट मोमेंट में मेरा ही जीत हुआ। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि इतना बड़ा लड़ाई में लड़ा, क्योंकि हर एथलीट तो ट्रैक में लड़ाई करते हैं और मेडल लेते हैं। इस बार लेते और दूसरा बार और कोई लेते, लेकिन ये देश में हिम्मत के साथ खुद के लिए लड़ाई करना बहुत बड़ा बात है। In 2018, Dutee won 2 silver medals at the Asian Games. मुझे जब वो मेडल मिला एशियन गेम में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2014 में तो मुझे निकाल दिया गया था टीम से। जब मैं भागती तो मेरे हिसाब से इंडिया भागता है। कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक इसी में मेडल नहीं लिया। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, उसी में मेडल आ जाएगा तो शायद मेरा पूरा सपना सब पूरा हो जाएगा। Our next nominee plays a sport widely acknowledged as the second most watched in India after cricket, badminton. PV Sindhu has won Olympic silver, and for the past 4 years she's consistently ranked among the top 10 female badminton players in the world. It's very important we have to believe in ourselves. That belief should always be there. No matter what, you can do anything in life.
So that is what I believe in, and that is what my strength is. You're not playing for someone else, you're playing for yourself. So, it's just you, and for that, you can do anything. PV Sindhu is India's most successful female badminton player. मेरा पापा मामा वॉलीबॉल प्लेयर्स थे एंड माय डैड यूज्ड टू प्ले. माय डैड इज़ एन अर्जुना अवार्ड इन वॉलीबॉल. और जब उन्होंने वॉलीबॉल खेलते थे, बाजू में बैडमिंटन कोर्ट्स थे, तो मैं उधर स्टार्ट किया था 2016 में. बस ये सोच रही थी कि मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स है और मैं ये सोचा कि आई हैव टू प्ले वेल, आई हैव टू गिव माई बेस्ट. बट एक मैच जीती रही और फाइनल्स आ गई थी, और फाइनल्स में भी मैं 100% खेली थी. बट या अनफॉर्चुनेटली इट वाज एनीबडीज़ गेम. बट ओवरऑल वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. एंड या जब मैं हार गई थी तब मैं थोड़ा आई फेल्ट बैड. But on her return from the 2016 Olympics, she got a big reception in her hometown, Hyderabad. A lot of people have been telling that you have no idea how it was here when you were playing. Big screens out there, and there were lots of people. So as soon as I got down, I mean, like from the airport se leke, till the stadium, it was like they were all like, they were holding my banners, and there were people standing there, even small children, school children, and I felt so happy that, people like love me so much, people support me so much. And that is when I thought, I still get goosebumps, like seriously, it's an amazing feeling. But because she'd lost to the finals of international tournaments a few times, she was criticized as well. Everybody was like, क्या हो रहा है आपको, या फाइनल में आके क्या होता है, फाइनल फोबिया, बहुत लोग पूछते रहते थे. बट फॉर मी, आई एम जस्ट लाइक, ओके, आई हैव टू गिव एन आंसर विथ माई रैकेट, एंड आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ. Last year I won the World Championships. That is also one of the biggest victories. 5 times, 2 bronze, 2 silver, and finally gold. You have to enjoy your sport. It's not that you shouldn't feel it like a burden where people are asking you to play and you play. It's just for you. You have to keep playing for yourself, and yeah, that's about it. Because at the end of the day, you need to enjoy in what you do. Tokyo 2020 आ रहा है, तो उसमें I want to get a medal for myself. That is definitely one of the biggest dreams everybody would have, and my ultimate aim would be that. For generations, women in India were told that their place was indoors, that sport was not for them. In the past decade or so, though, a crop of female players have, with their success, created a path for India's young women to follow. I'm with a group of university students who play different types of sports. So there's shooting, basketball, football and rugby. That's a very intense contact sport. Tell me, when you as a woman wanted to take that up, what was the reaction like? They were shocked, because rugby is a very tough game. They need strength, stamina, agility, all kind of fitness. But my father is very supportive. He told me to join it, and he encouraged me. My mother told me not to play. If you get any scare, no one will marry you. But after marriage, I'm thinking I will play, or I will choose it as a career. You're not just a football player, you also coach girls who are in school. What are attitudes like towards girls playing football, and also what about access to equipment? रूरल एरियाज़ में है, मैं जहाँ पे कोचिंग कराती हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी लड़कियों के घर वाले हैं जो बोलते हैं कि नहीं, शी कांट प्ले, एंड वो उनको फोर्स करते हैं कि नहीं खेलना है. बट उनमें इतना पोटेंशियल है कि जब वो खेलने आती हैं तो वो अपना बेस्ट देती हैं. इवन ये ग्रास तो हमारे पास बहुत अच्छी है. वहाँ पे तो जहाँ पे मैं कराती हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत बंजर वाली ग्रासेस भी नहीं होती. वहाँ पे बंजर ग्राउंड होता है, तो वहाँ पे जब वो अपने घर से इतना कन्विंस करके उनको आती हैं, एफर्ट्स करती हैं, तो वो बहुत बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि उनका पूरा एफर्ट मिलता है और वो बहुत पैशनेट होती हैं. How difficult is it still though for women to actually consider sport as something they can make a career out of? Like, you play basketball, would you consider pursuing it professionally? I don't really think so, because basketball in India, first of all, is not at all a recognized sport, even for the guys. But talking about girls, I don't think it's a wise choice
for choosing basketball as a career. Only if I go like abroad, like in US, where there's WNBA and there's little girls camps and everything, it maybe I might think about it, give it a try, but not in India. Now, what we've seen happen in India over the last decade is that there's a handful of sportswomen who've become really popular, who've become real icons and have broken glass ceilings. It's, what this program is actually looking at. To what extent does that inspire players like you? Because of the people who've come up, because of the recent sportswomen who've become successful. That's one of the reasons, I guess, our society has become more women-driven in sports, and they are now supporting women and actually not opposing it. It's been a positive factor for us, for people who trying to pursue the sports. In fact, our next nominee is a sportswoman who many in India look at as an inspiration. MC Mary Kom is an Olympic boxer, and she's won the gold for this country at several international events. And among the many distinctions she has is that she's come back to the sport after having children, something that's difficult for women to do in India, even those who have regular jobs. She's been the world champion in women's boxing 6 times, during a career that spans 2 decades. खून में थोड़ा फाइटिंग है साइड, मेरा माइंड उधर नहीं जाती है और सिर्फ मेरा गेम में फोकस करती हूँ. She comes from a remote village in India's northeast. मैं चालू से लेके मैं खेलना कूदना बहुत पसंद किया है. बहुत लोग मेरे को हंसी मजाक, क्यों गेम्स फुटबॉल खेलेगा गांव में कोई लड़की नहीं खेलती है, सिर्फ अकेली ही खेलती हूँ उन लोग के साथ. अच्छा नहीं लगता है लड़की शामिल होना लड़का लोग के साथ, ऐसे कोई मेरा हंसी मजाक, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकता, आर्गुमेंट हो जाएगा बाद में, फिर फाइट हो जाता है. मम्मी पापा इतना गरीब है, जॉब भी नहीं है, डेली बेसिस में काम करके अर्निंग करता है. मेन तो एजुकेशन में टाइम टू टाइम में हम लोग ड्रेस भी खरीद नहीं पाया, यूनिफॉर्म ड्रेस, वो भी अच्छा है मेरे ख्याल से. स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल से ये लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा. हे भगवान, 20 साल होने वाला है, almost 20 years I'm fighting. Mary Kom has 3 sons and returned to boxing after becoming a mother. A significant feat in a country which sees a large number of women drop out of their jobs after having children. शादी से पहले तो अचीव किया वो अलग की बात है, और माँ बनने के बाद अचीव किया वो तो मैं खुद को भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ. पहले मेरा गेम था सिर्फ एनर्जी, टेक्निकल तो ज़ीरो हूँ, स्किल ज़ीरो हूँ. ये ज़्यादा होने के बाद मैं ऐसे लग रहा है कि मेरा स्पीड भी बढ़ गया, मेरा स्किल भी इम्प्रूव होने लग रहा, टेक्निकली इम्प्रूव होने, फुटवर्क इम्प्रूव होने लग रहा. Mary Kom won a bronze medal at the 2012 Olympics and now has her sights set on the Games in Tokyo this year. विल पावर होगा और मेंटली स्ट्रांग होगा, तब फिर तो मेरे ख्याल से जो तुम्हारा पैशन है उसको फिर कौन रोक पाएगा. इफ आई कैन अचीव, व्हाई यू कांट. Our next nominee is para-badminton player Manasi Joshi. She lost her leg in an accident 9 years ago. And it was on her road to recovery that she converted a childhood hobby into a profession. In 2019, Manasi Joshi won gold at the Para-Badminton World Championships. 9 years ago, she had lost her leg after being hit by a truck. मैं जब स्पोर्ट परस्यू खेलती हूँ, बैडमिंटन बहुत ज़्यादा देर खेल जाती हूँ, तो मेरी जो स्टिचेस है वो कभी कभी स्वेल हो जाता है, कभी कभी मुझको रैशेस हो जाते हैं स्किन पे. चैलेंजेस तो है ही,
पर वो challenges को face करने के लिए solutions भी है ही. Manasi was introduced to badminton as a child. फर्स्ट था कि मेरे बहुत ऑलमोस्ट सारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे स्कूल के वो सब बैडमिंटन की कोचिंग में जाया करते थे. सेकंड रीज़न था कि मुझे वो खेल के बहुत ही मज़ा आता था और काफ़ी मतलब लाइक यू कैन शाउट, you can be yourself when you're playing the sport. Manasi is a qualified engineer and was working at a technology firm when she had the accident. मैंने मेरी इंजरी के बाद मैंने स्पोर्ट्स को परस्यू किया अपने रिहैब में और रिहैब के चलते चलते मैं कॉर्पोरेट लेवल टूर्नामेंट्स खेलती रही. घर से निकल कर ये स्पोर्ट्स परस्यू करना और एक लेवल तक लेके जाना वही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. और पैरा स्पोर्ट्स में तो अभी मैं 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन बनी, तो वो फ़िलहाल मैं बोलूँगी कि काफ़ी इट वाज लाइक अ पीक. So there are times when I'm not able to defend properly because of the imbalance. I want to work on that area where I'm able to defend better. You know, बहुत सारे steps पे अलग अलग challenges है. Para sports as a sport pursue करना, accessible playgrounds मिलना. कभी कभी मुझे लगता है सुबह उठ के अरे I have to again wear the prosthetic, I have to climb few steps. तो ये सारे मुझे लगता है, पर फिर मैं सोचती हूँ नहीं. I have become little target oriented. तो जब वो टारगेट्स हमारे नज़दीक ही होते दिखते हैं कि ये टारगेट्स अचीव करने हैं तो आई हैव नो अदर ऑप्शन, गेट अप, कम हियर. मुझे स्पोर्ट्स परस्यू करने के लिए मुझे मेन तो है कलीग्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू जा हम लोग ये काम देख लेंगे टाइप का. सो यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैड इन माई लाइफ. माइंडसेट जो है वो हमारे यहाँ पर काफ़ी चेंज हो रहा है और इंडिया में हम काफ़ी बदलाव देख रहे हैं और ये बदलाव जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यू नो वी हैव डन इट. Manasi Joshi there. What she, Vinesh, Phogat, Dutee, MC Mary Kom and PV Sindhu have done collectively is that they've broken barriers for girls and women in India and given them role models to look up to. One of them will win the BBC Indian Sportswoman of the Year award, and it's you who get to make that choice in an online vote. Thanks for watching.